India stands at an inflection point today to a transformative overhaul. Our criminal justice system has finally broken the shackles of its colonial power. Our journey began in the mid 19th century, and Thomas Colonial's work led to the qualification of the Indian Penal Code in 1860. This code was an effort to unify the diverse legal system across British India under a single framework. However, it was inherently a tool of colonial control. The laws were designed to uphold the British Empire authority, prioritizing penal liability and retribution over justice. This was followed by the introduction of the Code of Criminal Procedure in 1898, another product of the colonial system. CRPC was designed to serve the administrative and judicial needs of colonizers, which always resulted in acceptance, control, and punishment. It was a broad framework reflecting the priorities of a colonial regime, considering the values and aspirations of the Indian people. For decades, these colonial legacies influenced the criminal justice system. The focus was on punishment rather than reform, on maintaining order rather than fostering a just society. However, as India embarked on its path of independence, its democratic governance, the need for a legal system that reflected our constitutional values and aspirations became increasingly evident. Fast forward to 2023, we witnessed the introduction of three new laws that mark a decisive break from our colonial past. These laws, codified by the government of India, embody the spirit of our constitution and principles of justice, equity, and human rights. The Bharatiya Nyaya Samhita seeks to heal communities and individuals rather than merely exacting justice. By focusing on rehabilitation, it opens the door to second chances and acknowledges the potential for achievement within every area. It has also abolished tradition law, which has been used by the British to suppress freedom fighters like Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak. Further, the Bharatiya Nagrik enhances the rights of the accused and victims alike by streamlining procedures and reducing delays. It aims to make the justice system more efficient and accessible. This not only benefits the accused, but also ensures that victims receive timely justice, reinforcing their faith in the legal system. Moreover, the Bharatiya Sakshi Adhikar aligns the legal standards with contemporary times. By incorporating modern technology and safeguarding individual rights, it ensures that our justice system remains relevant and effective in a changing world. These legislative reforms represent a paradigm shift that reflects our collective aspiration for a criminal justice system that is not merely a relic of colonial rule, but a robust framework rooted in our democratic ethos. A system that prioritizes justice and rehabilitation, recognizing the potential for redemption and growth in every individual. The new laws are envisioned to create a legal environment that is efficient, just, and legal-centered, moving away from the punitive focus of colonial era legislation. This evolution signifies a profound shift from an era marked by colonial imposition to a new era defined by laws drafted by the people of Bharat for the people of Bharat.
Good evening, ladies and gentlemen. We find ourselves at a pivotal juncture in the history of our legal system. On behalf of Lawyers' Voice, we Rashi Mangal and Sanjay Nigam welcome the August gathering present today for the symposium on the new criminal laws from colonial imprints to emerging India. Today's symposium aims to dissect and discuss the journey of the criminal laws in India, tracing their roots from the colonial era to the present day reforms. The current legal reforms are not just about changing statutes, they are about ensuring that a legal system upholds the value of justice, equality, and human dignity. Today's discussion will be enriched by the insights and experiences of esteemed speakers who have been at the forefront of legal thought and practice. Their perspectives will not only shed light on the historical context of our criminal laws, but also chart the course for future reforms. We are deeply honored to have among us the dignitaries for the symposium, Shri Arjun Meghwal, Honorable Union Minister, State for Law and Justice. Honorable Mr. Mahesh, Jethmalani, Advocate, Member of Parliament, Rajya. Thank you very much. Shri Chetan Sharma, Learned Additional Solicitor General, Training Center. So we would request you to please join us at the stage. Shri Mohit Mathur, Senior Advocate, President of Delhi Court Bar Association. Mr. Victim-centric, Honorary Secretary, Supreme Court Bar Association. Thank you so much sir, for joining us today. Along with the dignitaries, Lawyer Voice would like to extend a very warm welcome to Honorary Secretary BCD, Mr. Rakesh Mishra, sir. Pinky Anand, Senior Advocate. Mr. Sunil Kagala, sir, Senior Advocate. Ms. Sonia Mathur, Senior Advocate. Ms. Monica Rahman, Senior Advocate. Thank you so much all for joining us. हमारे बीच में हमारी बार के मेरे साथी कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। राजेश मिश्रा जी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी, मेरे बड़े भाई जतन सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ऊपर जी भी हमारे बीच में है। सभी का स्वागत। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेरी सेक्रेटरी संदीप शर्मा जी के हमारे बीच में Namaskar and good evening to all. India is a nation born of liberation, breaking the rusting chains of the colonial past. We are on a momentous journey to witness in India, where the scales of justice balance not with the weight of colonial bias, but with the fairness of Bharatiya ideals. Where justice is not a tool of oppression or a means of punishment, but a shield of protection. Where the justice system does not enslave, rather uplifts. The legislature has painstakingly and meaningfully reformed the Bharatiya criminal justice system, encompassing substantive crime, procedure, and evidence by codifying the trilogy. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita will replace the Code of Criminal Procedure 1973. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 will replace the Indian Penal Code of 1860. The Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 will replace the Indian Evidence Act of 1872. The significant overhaul of the obsolete laws has aligned them with the constitutional and democratic ideals. With an increasing reliance on technology in justice dispensation, the new enactments are futuristic, more inclusive, and equitable. From the colonial imprints that once shaped our justice system, the new laws bring a robust framework of a self-governing nation equipped with victim-centric laws.
with a focus on national security as India emerges powerfully on the global stage. The need for strength and self-assertion can be interpreted as a call for a legal system that strongly upholds the rights and dignity of the Indian people. इसी विचार के साथ मैं प्रस्तुत करती हूँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से शक्ति और क्षमा की कुछ पंक्तियां। क्षमा दया का त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर प्यार सुयोधन तुमसे प्रभु कहाँ कर हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष पूर्ण विनीत जितना, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उठना। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। We are now inviting esteemed chief guests to join us in the lighting of the lamp, symbolizing our shared dedication to advancing justice. My request to all, sir. I request Shri Surinder Kumar Gupta, President of Lawyers Voice, to deliver the welcome address. Distinguished guests, esteemed members of the legal fraternity, ladies and gentlemen. It is with immense pleasure and pride that I extend a warm welcome to you and behalf of my voice to this distinct symposium titled New Criminal Law from Colonial Imprints to Modern. Heartfelt gratitude goes out to our esteemed dignitaries for raising this topic. I welcome our very passionate and lively Honorable Union Minister of State for Law and Justice, Shri Arjun Meghwal ji, our respected and distinguished senior advocate and member of Parliament, Shri Mahesh Jethmalani, our vibrant senior advocate and additional solicitor general to the High Court, Shri Chetan Sharma, our assertive leader, senior advocate and president of Delhi High Court Bar Association, Shri Mohit, our assertive leader and honorary secretary of Supreme Court Bar Association, Shri Victim, as many of you are aware, Lawyers Voice stands as a beacon for enhancement and welfare of legal profession. Our organization is deeply committed to advancing the interests of the legal fraternity and fostering professional growth. This noble vision has been brought to fruition
through the dedicated efforts of our founder members, including our esteemed secretary, Mr. Leader, whose unwavering dedication has been instrumental in our journey thus far. We recognize the paramount duty bestowed upon us to uphold the honor and integrity of the legal profession, to advocate for social justice and public welfare, and to cultivate collaboration among our members and the wider legal community. Through a merit of seminars, discussions, and workshops, we strive to equip our members with necessary skills and knowledge to excel in their respective fields. Allow me to briefly share my reflections on the theme of today's symposium. India's criminal justice system has undergone significant evolution over time. Rooted in the colonial era, our laws have been molded by historical and socio-political influences. The Indian Penal Code 1860, for instance, was crafted under colonial rule, often neglecting India's indigenous social fabric. Despite achieving independence, many colonial era provisions endured, posing challenges in reconciling the rule of law with human rights principles and addressing the unique needs of Indian society. However, the advent of modern technology brought new challenges necessitating legal reform. In response to these imperatives, the Indian Parliament has enacted transformative legislation such as the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, and the Bharatiya Shaksha Adhiniyam 2023. Respected acting Chief Justice of High Court of Delhi, Honorable Mr. Justice Manmohan is also present. We welcome him also. One of the American authors says, I am quoting him, the dead cannot cry out for justice. It is the duty of the living to do so for them. Unquote. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has fulfilled his duty towards the nation by shifting focus of the criminal law from penalizing to that of doing justice. These new laws hold the promise of a brighter future for all citizens. And I am optimistic that the insights shared by our esteemed speakers today will enrich our understanding and pave the way for meaningful discourse. Once again, I extend my heartfelt gratitude to all present and a special acknowledgement to our distinguished dignitaries for gracing this occasion with their esteemed presence. Our wisdom and expertise are invaluable to us, and we are truly honored to have you share your insights with us. Thank you and welcome all of you once again. I would further like to invite and welcome Mr. Honorable Mr. Justice Saurabh Banerjee, who is among us and have joined us today. As we commence this auspicious occasion, we have the honor of recognizing and felicitating our esteemed dignitaries for their invaluable contributions to the legal field. I would like to invite on stage Mr. Ankit Raj and Mr. Himanshu Pathak to present a shawl and a potted plant to Shri Arjun Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice.
along with uncle and Ms. Priya Mishra to present the shawl and the potted plant to Shri Mahesh Jethmalani, Senior Advocate, Member of Parliament, Rajya. I request Mr. Meghwal and Ms. Hon'ble to present a shawl and a potted plant to Shri Chetan Sharma, learned additional solicitor general. I request Mr. Chetan and Ms. Hon'ble to present a shawl and a potted plant to Mr. Manmohan, Senior Advocate, President, Delhi High Court Bar Association. I apologize, Ms. Asta Gupta and Mr. Chetan. I request Mr. Ankit Sivaj and Mr. Lakshay Kaushik to install an important plant to Shri Vikrant Yadav, Honorary Secretary, Supreme Court Bar Association. We are honored to have with us today Shri Mahesh Jethmalani, Senior Advocate and Member of Parliament, Rajya Sabha. Sir, we request you to kindly share your perspective on today's topic. Sir. Honorable Law Minister, Law Justice, Honorable Acting Chief Justice, Delhi High Court, Chetan Sharma, my friend, ASG, Delhi High Court, Mohit, friend, President Delhi Bar Association, Victim-centric, Mayor G, Uttar G, distinguished members of the bar, friends, ladies and gentlemen. Mine is not a keynote address, not even a keynote, it's not even a key address. But because I had to catch a flight, I've been given precedence. So please don't think that my insurance and I have the previous speaker. Please speak for Honorable Minister and Honorable Acting Chief Justice, and the rest of us are supporting us, including me. Now, this is a subject which I've written articles, been asked to speak on a number of symposiums. It's a subject of which I've had an early association. During COVID in 2020, the Home Ministry constituted a panel, a committee for this reform of the three criminal statutes. And their chairman, some members, was Professor Bajpai, chaired it. Many students participated, and we were given a mandate to finish it within a particular period of time. Thanks to COVID, I think we finished it even prior to the time schedule that was given to us, and we submitted our recommendations to the Home Ministry.
for the consideration of the various heads of ED, CD, and so on and so forth, because obviously being lawyers, and most of us defense lawyers, and students who are liberal in attitude, it was expected that we'd be very reformist and liberal in the provisions, and so they wanted it to be diluted by the various agency chiefs. And to some extent, that's what's happened. To some extent, that's what's happened. It's a happy mixture of liberal lawyers looking at it from the sense, from the perspective of from human rights, etc., and the security of the state and the interest of the state by the various agencies. Now, first of all, one thing was unanimous by everybody who participated, including stakeholders who came for these committee meetings, subsequently who came before the Home Ministry and its officials as well. And one thing was unanimous, that these laws were indeed colonial. They were of great antiquity. The Indian Penal Code was of 1860. The Criminal Procedure Code was of 1898 and then amended in 1973. And of course, the Indian Evidence Act was of 1870. So these require, in any event, they were outdated. And it is really surprising to look at some of the provisions that remain in the statute. It is really surprising that these colonial provisions were allowed to stand. They should have been looked at long time back, except for the Criminal Procedure Code, which really did not bring in sweeping reform, the 1973 Criminal Procedure Code. But there have now been, I might say, and this might be a little bit of lack of humility on my part since we started it all in the Criminal Law Reform Committee, that there have been fairly sweeping changes made, and changes which were in the right direction, and changes which were needed to break with our colonial past. Now, since there's a paucity of time, very briefly, I'll give an overview of the three statutes. What was colonial and what is emerging India? First, there is the Bharatiya Nyaya Sanhita, which replaces the Indian Penal Code. Now, this act was amended a few times, the whole Indian Penal Code, since independence. But the amendments were mostly formal. For instance, offences by public servants were removed from a particular chapter. Section 161 and 165 of the whole Indian Penal Code, and all these sections were put under the Prevention of Corruption Act. So they were removed, these corruption offences were removed from the Penal Code, and a new act dealing especially with corruption by public servants was enacted. The second type of change, which was brought about, was basically a knee-jerk reaction to events that took place in this country. So when we had the horrendous Nirbhaya episode in 2013, I believe it was, we had the provisions under the Nirbhaya Act, and a lot of the sections of the IPC were amended. The sections pertaining to rape, the sections and new sections were added, voyeurism. You're all familiar with those that came in post Nirbhaya. So it was a knee-jerk reaction. How effective it has been is for present and future generations to decide whether the new teeth given to the law has effectively made the debtor. But my own personal view is that replacing laws is one thing, but attitudinal change, patriarchal attitudes in particular, need to change before sexual offences and the like can really be eradicated from the country. But that's another subject. Now, what was it about the existing Indian Penal Code which needed replacement? Sedition. Sedition, so there's a strong thrust in the Indian Penal Code or the new Bharatiya Nyaya Sanhita. There's a strong thrust towards security of the state. That is the first feature. Now, sedition, for instance, was a purely colonial law, as defined, 124A, was a purely colonial law, and was meant to protect the colonial regime. The statute 124A basically punished
dissatisfaction with the government by law established. Now, this was basically an act meant to protect colonial rulers from its colonial subject. So when modern India got independence, 124A was often invoked when you had seditious writing. And people used to say, but this is a colonial law because it's meant to protect the government. It doesn't protect India, it protects the government. So the sedition law was basically, the wording of the sedition law was basically meant to protect, as I said, the colonial masters of that time from any sedition by their colonial subjects. The new sedition law has made a very significant change. The Sanhita now seems to remove this anomaly with new section 52. It eschews the word sedition. Sedition doesn't exist in the Sanhita anymore. But it talks about the offense talks about any act endangering the sovereignty, unity, and integrity of India. The section imposes a life sentence of imprisonment or imprisonment up to 7 years and a fine for anyone who by written or spoken words excites or attempts to excite. Now, there are very clear actions which are punishable under the section. It's not vague disaffection. The word disaffection is no longer used. What is excites or attempts to excite? Secession, which means breaking away, or endangers the sovereignty, or subversive activities, or encourages feelings of separatist
the word idiot in the IPC. I never invoked it or used it, so I had the good fortune of not knowing that we had that insensitive word. So, sections 89 in the general acceptance chapter contains the heading Act done in good faith for the benefit of child or insane person by consent of guardian. Section 27 of the Samhita replaces the word insane person with the more benign expression person of unsound mind. Section 305, which deals with the abatement of suicide of child or insane person, uses the terms insane person and idiot. This is 305. The corresponding new section omits these and uses again the expression persons of unsound mind. So, in short, the IPC was wholly out of touch with India's needs and changing circumstances. And the Samhita, now a much more widespread, effective, and humane statute, has replaced it by a statute more appropriate to Indian law. So, God, other laws, enter laws of independent law. Now, I could go on, but the of time. Now, I just a quick summary of the other two statutes. Just a very quick one, and then I much more less to speak. He'll as good as I can. The Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, which replaces the Criminal Procedure Code, is for those criminal practitioners who are in court every day should read these sections because there are two-fold features. What is highlighted in this statute are two things. One is technology is used in almost every field of investigation and trial. That's one. The second is timelines are set for almost every stage of the criminal justice system. So there are timelines for completion of investigation. There are timelines for further investigation. All 90 days. You can't interminably say further investigation and keep an accused in jail under 178. We have to put in timelines for discharge, filing discharge applications, disposing of discharge applications, trials. We have timelines for judgments by every court. So at every stage, the emphasis is on speedy delivery of justice, using methods to enhance investigation techniques through technology. One example, the entire search and seizure procedure now, has to be now mandatorily. It has to be put on audio and video. It has to be video recorded. From start to finish, the admissible part of search and seizure will not be panchnamas, but it will be their recording. So gone are the days for police dishonesty in getting professional punches who sign panchnamas later on. That's gone. And gone are drug planting cases. No longer can you plant drugs. And this is happening in narcotics cases. No longer can the narcotics squad play any mischief and plant drugs with anybody because the entire procedure from start to finish has to be kept on audio and video. There are many other provisions, but for paucity of time, as I said, I will desist from saying any more. There's very little. Fortunately, the Indian Evidence Act has not been tampered with much, except for the fact that electronic evidence has now been permitted, right, which it should be. But the passage of time has proved that the Evidence Act actually is time-tested and serves the interests of justice well. The only thing that has happened is that, again, under the Evidence Act, certain pejorative terms have gone, but not really pejorative terms. So, in the Bharatiya Saksha Adhiniyam, which replaced the Indian Evidence Act, just two things. What is the departure from the colonial era? Words like Parliament of the United Kingdom, I don't know why we still have to refer to it right up to 2024. Parliament of the United Kingdom Prevention Act notification by Crown Representative, London Gazette,
any dominion, colony, or possession of his or her majesty, during Lahore, United Kingdom of Great Britain and Ireland, Commonwealth, Her Majesty, or by the British Council, Majesty's government, copies or extracts contained in the London Gazette or purporting to be printed by the Queen's printer, possession of the British Crown, Court of Justice in England, Her Majesty's domain, 51 Sparta, Barrister, has just been deleted and we are no longer. And we are all advocates now, finally. Gone are the words, right? Vakil, Peter, and Barrister. They're out. So, welcome to independent India and goodbye to colonial legacy. Welcome, thank you for your time. Thank you so much for highlighting significant changes. It gives us immense pleasure to have amongst us Shri Mohit, Mathur, Senior Advocate and President, Delhi High Court Bar Association. Sir, I request you to kindly share your views on today's topic. Good evening, everyone. Mr. Arjun Meghwal, Honorable Minister of State, United Charge, Law and Justice, Honorable Acting Chief Justice, Justice Manmohan, Mr. Mahesh, Jethmalani, Senior Advocate, Member of Parliament, Rajya Sabha, Mr. Chetan, Sharma, Senior Advocate and the Government Judicial Solicitor for me and elder brother, Mr. Victim-centric, Honorable Secretary, Supreme Court Bar Association, Mr. Surendra and Neeraj, otherwise, senior advocates, members of the bar, my young friends, ladies and gentlemen. The topic suggested today was for the new laws from the colonial era converging into the new India. As the topic suggests, we must, as advocates, also look at the intention that we are told while interpreting any statute, the intent of the legislature while enacting the statute. The intention of the legislature and the work carried out to draft these is laudable, undoubtedly, because they have gone into a lot of efforts, a lot of aspects which had to be given a go by and adapt ourselves to what is the requirement of the day. And as Mr. Jethmalani rightly said, the changing scenarios had to be adapted. The stakeholders were taken into confidence. But sir, you have given one side of the coin, one perspective. Yes, undoubtedly the statute as framed and as likely to be enforced from 1st of July, for which most of us, at least on the criminal side, are going to utilize our vacations for this purpose. To understand it from 1st of July, we need to know. Forget BNS, forget IPC, learn BNS. So there will be no chance of this. It will be these or that. So start learning the new numerals. This Jethmalani has rightly taken us through and in detail. Some kind of a deterrence theory was added and looked into while introducing the punishments. Because in 33 offences, the punishments have been increased. For 83 offences, the fine stands to be increased. But in all these cases, no criminal lawyer, I think, would have any objection because most of them were those penal provisions which actually required to be made a little more stringent looking at
scenario today is. And fines of 100 rupees or 500 rupees actually doesn't serve the purpose. It's probably petty cash for many. So some kind of a deterrence is necessary when you are dealing with any penal statute. But what is more important is that we must understand that these statutes have been brought in, not just in old wine in a new bottle, but also with a theory of not a Dand Sanhita, but a Nyaya Sanhita. So the concept of Nyaya has been given a much higher platform and pedestal than what we generally learned in all these years of the penal statute. And why I say so is, what we used to see only by way of judicial activism and judicial pronouncements, today we have community service as an sentencing provision for 6 offences, and in some, for the first time offences, community service has been added. You can recall, till about last year, one of our honorable judges used to force us to agree to planting of trees. There have been occasions. There have been occasions where the courts would ask teachers who are being penalized for any kind of an act of this demeanor to do some remedial classes. So those kind of community services are welcome change, undoubtedly. And as Sir has taken us through different sections of removing of sedition and introducing the concept of Deshdo, the mandatory minimum punishments have been increased in sentences, extraterritorial applications, and all these things are there. Something which I want to be here we are all students of law, and it will be our onus, as Mr. Gupta said in his welcome speech, that those who cannot access or knock the doors of justice, we have to be their voices. And when we have to be their voices, we have to also understand what the law provides for them, what the law safeguards for them, and what the law they are being penalized under. As students of law, please understand the statute starts the preamble that it's a consolidating and amending act. And why I emphasize on this word consolidating, that all of us here understand that consolidating act means that you are assimilating all into one. But what Mahesh mentioned is perhaps not a safeguard when you ask the superintendent of police to decide whether he has to invoke UFPA or a BNS. I doubt any lawyer would accept a power given to a police officer to decide whether to invoke UFPA or BNS. And why I say so is, please understand that the legislature in its wisdom, while including it as an offense under Terrorist Act, the same definition into the BNS, has not altered your provisions of bail. The provisions of bail in the 479 of BNSS, the Nagrik Suraksha Sanhita, does not have the twin conditions which are requisite for the UAPA Act to seek bail. So when I have a simpler system of bail under BNSS, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, why should a superintendent be allowed to put me to a higher and a stricter test at his whim and fancy? Those guidelines are missing, and therefore, we as students of law and as advocates and as champions of justice, we will need to take it up in our subsequent challenges and the cases to somehow get judicial verdicts on drawing guidelines. What are absent? So those missing links we have to fill in when we
understand the challenges that are posed. Similarly, organized crime, which Mr. Jethmalani mentioned, is being included in 111. There is a section 112, also in Bharatiya National, which says petty organized crime. Now I ask myself, what we have learned is जो पकड़ा गया वो चोर. And in police stations we would have 10 cases posted on one person. As soon as we get one thief caught, all the unclaimed cases, all unsolved cases will be posted on. So we have now a higher degree. The legislature intended, and a very welcome thing if you read PNSS, it deals with gradation of sentencing. It deals with first time offences. First time sentencing is on a lesser grade. And the second offender or a repeat offender, as we call it, would be punishable with a higher sentence. But if you include petty organized crime as an offense, then these petty criminals will also be posted. That's where we have. And I always say, the statutes may be having something lacking, but we should not be lacking in our efforts. So when we have cases, and another welcome change, which due to paucity of time, Jethmalani perhaps missed, is the offense of mob lynching and deaths caused by mob lynching into section 103 of murder itself. The class 2 of murder, 103, actually includes offenses being committed by these mobs. And the hatred, which generally we as defense counsel in this debate. Something which Delhi has to get used to is there will be no MMs now, no metropolitan magistrates. All over the country, the nomenclature of the judges in the district judiciary will be the judicial magistrate second class, judicial magistrate first class, sessions judges, and executive magistrate. So let's get used to having our officers as judicial magistrates first class, the chief judicial magistrates, TJMs, ACJMs, etc. Now, one good provision, which was otherwise a judge-made law, was the zero FIR concept. Now, this zero FIR, though introduced in section 173, which used to be 154 of the current CRPC, in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is section 173. What it permits is whether the ilaka has the jurisdiction or not, yet an FIR can be registered. Till now, what we have learned from the judicial pronouncement is, if there is a zero FIR registered, it will be then sent to the concerned jurisdiction. Immediately on recording, you record the FIR, term it as a zero FIR and send it to the concerned. Unfortunately, it skipped the attention of the lawmakers, or the section has been added in such a fashion that it allows even arrests to take place in the places of jurisdiction.
statements to be recorded and even confessions to be recorded and even 164 statements to be recorded in cases without jurisdiction. All that is left is that at the stage of trial, it will be sent. Now, this is a place where we face a lot of challenges. The case parties are in Delhi, somewhere in Hyderabad, Kolkata, or other places. The man has contacts and he gets his FIR registered. He'll call, get the person summoned there to the police because police has the powers to investigate. He can be arrested without jurisdiction because they are permitted to do so. The magistrate, though doesn't have the power to take trial, but has the power to record the statement, deal with the arrest. Now this is a gray. Lawyers here will have to develop this law, and lawyers across the country will have to deal with this, and our honorable courts will have to see that this is least misused by the agencies. We cannot allow the agencies to run amok. Gender neutrality in videography is something which is actually very necessary because again we people are guilty. We tell our clients कि घर पे किसी मेल मेंबर को मत छोड़ना, सर्विस नहीं हो सकती. If the person is not there, only a male member can take the service, but not anymore. Now, the service of summons is gender neutral. So even if there is a lady there in the house, she can be served, which I think will help reduce the time that is lost in doing the basic things. Again, something good that has happened is in what used to be 156.3, getting an FIR registered by going to the magistrate after complying with the first complaint to the SHO and then going to the superintendent of police under 154.3. The new section 173.4 says that if you have gone to these two levels and you come to the court for seeking directions for registration of FIR, he will ask the person concerned also. The proposed accused will also get an option. This is something which is necessary because this 156.3 misuse has been replicated in a number of judgments, including Priyanka Srivastava recent judgments, where they said asking for affidavits. And this also helps because the section 173 today allows that for public servants, they have another additional safeguard that instead of a sanction at the time of cognizance, their superior officers will need to give an approval at the time of institution of the case itself. So that's a very welcome thing, but as a defense lawyer, I always say that bureaucrats drafting the law wanted to first protect themselves. So the public servants ensured that they are saved, the others may suffer. But something which as defense counsels we always feel, and we are most affected with, is bail actions. Please read the new section 482, which is of anticipatory bail. No more for caution. The BISS section 482 for anticipatory bail has made it a standard higher test for going for anticipatory bail. It says now you have to show reason to believe, not a mere apprehension of arrest. So while drafting, please be careful. Instead of using the word that I apprehend arrest, it just might get dismissed. So please start using the word, and using the word, I have a reason to believe that I'll be arrested. Whether that's substantially judged or not, I can't say. That's what time will tell. But you need to start using it in your language. You need to start using it in your delivery to the judge and convince them that your reason is a very valid reason. The last thing which I always felt in these statutes, we need to understand it and challenge it, use it, is on the point of retrospective.
time is too short. I can discuss it at the point of time. It's a very interesting thing. If an offense starts on 29th of June and ends on 2nd of July, what will happen to me? Because BNFS protects proceedings initiated. BNS protects offenses which have been committed, and if you have suffered those offenses prior to the BNS coming into force, you will come in, you can still invoke the jurisdiction, but which one? CRPC, BNSS, BNS or IPC. Now that's a homework for all of us. And with that, I say thank you very much for allowing me. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your perspectives. We are deeply thankful to Shri Chetan Sharma, Learned Additional Solicitor General, for his presence today. Sir, we request you to kindly share with us your valuable insights. सबको नमस्कार। संध्या, जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरे आते ही हलचल शुरू हो गई, कुछ चले गए, अच्छी बात। सबसे पहले तो महेश जी चले गए, बड़े भैया आप, अब आप लोग सारे आराम से बैठे। मैं बहुत संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। देखिए, आज का जो विषय है, फ्रॉम कॉलोनियल टू द न्यू इंडिया, कॉलोनियल लॉज टू द न्यू इंडिया, 3 कानून आते हैं जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। मेरा एक मानना है कि ये तीनों कानून जो है, ये राजपथ से कर्तव्य पथ तक जाते। जैसे राजपथ बदला गया तो एक सबजुगेशन, कॉलोनियल माइंडसेट, मैकॉले की माइंडसेट है, जो कि 1929 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आप सबको पता है कि मैकॉले साहब ने क्या कहा। ये उन्हीं के कानून है जो बदले हैं। मोहित जी, हमने कुछ नया इसमें ऐसा नहीं किया जिससे गतिरोध पैदा हो। हमने गतिरोध जो 300 साल का था उसको समाप्त किया है। और जो उन्होंने क्या था, इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश के संस्कार, हम केवल टेक्निकल रूप पे यहाँ राज करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप पे आज भी एक कॉल के ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, करोड़ों के करोड़ों लोग कुंभ के मेले में चले जाते हैं। इसको कैसे तोड़ना है? वो कानून है, ये वो कानून है जो पीनल कोड के नाम से, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से, ये अब जो है ये राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हम ये मूल एक भ्रांति है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या मॉडल है? सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है? धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मः ततो जयः। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या है? राम दरबार है, मूल ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म के साथ जुड़ा है न्याय, धर्म के विहीन, धर्म के निरपेक्ष नहीं न्याय है। इस देश की न्याय संहिता जो है, इस देश की जो न्याय मीमांसा है, वो धर्म और केवल धर्म पर आधारित है। इसको भी क्या कहा है? रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए धर्म को कहां जोड़ा गया? यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो। केवल धर्म, जहां जय होगा, जय कहां होगी? जहां धर्म होगा। तो ये जो धर्म निरपेक्षता जो है, ये जो 40 में 42 में संशोधन से आई है, ये अब सापेक्ष होने की ओर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
ये राजपद से अब कर्तव्य पद पर है, ये दंडात्मक से अब न्यायप्रद है। इसलिए यहाँ विक्टिम को जिसको बिल्कुल अलग किया गया था, अब विक्टिम जो है वो बोल सकता है, उसको कॉपीज दी जाएंगी, उसकी सुनवाई होगी। और ऐसा नहीं है कि अक्यूज नहीं होगा, अक्यूज की भी सुनवाई। ये मूलभूत परिवर्तन है। टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा उसमें संग्रहित किया गया। अब डिलेज को रोका गया। ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी, उसको पारदर्शिता को पूरा का पूरा उसमें हवा बिल्कुल बहेगी चारों तरफ से, उसमें कोई रुकावट। तो आज की इस संध्या में मैं सबसे प्रथम अपने माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वो आए बहुत घमासान के बिगड़ जंगलों में से निकल के, ऐसा लग रहा है मानो विजय श्री उनके चेहरे पर सुशोभित हो रही। तो नाम भी देखिए, नाम भी आपके टॉपिक के साथ है, अर्जुन और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। तो यथा धर्म का है, यदि योगेश्वर है, तो जहाँ योगेश्वर है वही धर्म। तो आप माननीय मंत्री जी धर्म को भी सन्निहित करते हैं और न्याय को भी सन्निहित करते हैं, इसलिए तो आप न्याय मंत्री हैं। हमारे सर्वप्रिय एंड मोस्ट डॉक्ट्रिनेयर acting Chief Justice, you will always see a smile on your face. Such a personality you always fortunately have. I wholeheartedly, on behalf of all of you, standingly awake Justice Manmohan. इसका भी नाम आप देखिए, इसका नाम आप देखिए, इसका नाम है मनमोहन। मोहन कौन है? मोहन कौन है? मोहन वही है जो नर नारायण के बैठे साथ में। बोलने की आपको ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ गाड़ी चल रही है। अब देखिए, भगवान शिव का काम है कि हिसाब डिफरेंस करना। अब वो अपनी धारणाओं को लेकर तो वो चले गए, महेश जी हैं वो तो चले गए। और हमने क्या करना है? हमने उसकी जो तात्विक ईमानदारी है, ये बहुत गहरा विषय है। इसको मैं आपको उसमें लाइट वे में प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे आप बहुत, जैसे महेश जी ने कहा, मोहित मेरे छोटे भाई उन्होंने भी कहा, बहुत इसमें लगन हुई। हमने 4 टेक्निकल सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए थे। दूसरा 4 टेक्निकल सेशन हुए जहां ये सारी चीजें हुई। मैं नहीं कहता इट इज पिक्चर परफेक्ट, ये संशोधन होंगे। ये जो मोहित जी आपने जो बातें कही हैं, ये मेरा ख्याल है कि हम सब लोग इसका पूरी तरह से संज्ञान देंगे और जहां जहां इसकी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हम सरकार को इसको पेश करेंगे। नहीं तो कानून जो वो अपना काम बीच में हस्तक्षेप करके इसको ठीक करें। लेकिन क्या ओवरऑल जो है, ओवरऑल में आप ये देखिए कि अब we have taken off the yoke of a mindset which was primarily ordained to subjugate the subjects. तो भारतीयता जो अब ये अपने आप में यहाँ प्रदर्शित होनी भी चाहिए, क्योंकि ये इस देश के नागरिक हम हैं। तो 300 साल पुराने कानून, कुछ तो ऑडियोज हो चुके हैं, कुछ ने अपनी खराब हो गई है, लेकिन जो अब टेक्नोलॉजी जैसे चेंज, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड, जिक्र एफआईआर में मैं कहूंगा कि पहले एक अमला अगर जाती थी और उसके साथ कुछ अनहोनी हुई तो वो जाती थी तो क्या बोलते हमारी जुडिशियल नहीं बनती।
तुम दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाओ। वो कहते था हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तब तक तो सारा क्राइम सीन ही खत्म हो जाता। तो अब ये क्या, ये कहता है आप 0 FIR लॉन्च करो, उसके बाद उसको भेज दो। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब इसका फॉलोआउट क्या है दूसरी तरह से, ये इट्स अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन। आई एम श्योर दैट वी ऑल हैव एन ओपन माइंड। मैंने साहब लॉयर्स वॉइस के जो प्रणेता हैं उनका मैंने जिक्र नहीं किया। गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। यादव साहब आप जीत के आए हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। और एक तत्वाधान में लॉयर्स वॉइस के जो बिल्कुल हमारे बाईं ओर बैठे हैं, that doesn't mean he's a leftist. जी अनथक परिश्रम करने वाले, सबको जिताने वाले, सबको साथ देने वाले। लॉयर्स वॉइस ने हमेशा बड़े सटीक मुद्दों को उठाया, और इन मुद्दों को ये क्योंकि उठाना है, कुछ मुद्दा उठाना ऐसा नहीं है। लॉयर्स वॉइस जहां तक मैंने देखा है अपने कार्यकाल में, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बिल्कुल प्रासंगिक ना हो। वो बिल्कुल इट इज रेलेवेंट फॉर द टाइम, इट इज रेलेवेंट फॉर द लीगल इवैल्यूएशन दैट इट डिजर्व्स। सो लॉयर्स वॉइस के इस तत्वाधान में ये जो आज संगोष्ठी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें आपके पास आ चुकी हैं, नई आई हैं तो ले लेना। उसमें कुंजी भी है, मोहित भैया कुंजी को कैरी कर रहे हैं। जैसे मैंने कुंजी उनकी ली तो उनके ताले हिलने लगे। मैं जो महाराज मैं भाड़ों पे बात नहीं करता, धरा की बात करता हूँ, क्योंकि धरा पृथ्वी देवी लोकनाथ धरती तो है, तभी तो धर्म के 6 लक्षण है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, धर्मस्तुतो जय, आप मानेंगे ये कहां से आई है? ये खंड 13 में से 153वां श्लोक है महाभारत का, और ये 13 बार रिपीट हुआ है महाभारत के ही मध्य में श्रीमद् भगवत गीता की, जो कि आज तक पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ग्रंथ। ये उसका पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नहीं लिया। और धर्म जो है वो कभी निरपेक्ष हो नहीं सकता, वो हमेशा सापेक्ष ही रहा। हमारे कहने ना कहने से कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए मेरा ये मानना है कि 1 जुलाई से इस देश की जो न्याय की प्यार है वो एक न्याय की तरफ जाए। आप कोई इडियोटिक, कोई ल्यूनेटिक, कोई अनसाउंड माइंड, ये नहीं होंगे। दिस इज मोर व्हाट शुड आई से, ये संवेदनात्मक, इसमें स्पंदन है, इसमें दंड नहीं है, इसमें कम्युनिटी सर्विस है। देखिए मूलभूत सिद्धांतों का इसमें परिवर्तन है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको मुझसे अधिक अभ्यास है, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वहित और सर्वविदित लोकप्रिय नेता और हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल से कहूंगा कि वो आगे अपना ऐसा भाषण दें जिससे आप सब प्रसन्न होकर जाएं और प्रसन्न ही रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you so much, sir, for sharing your insights. We are deeply honored to have with us today Justice Manmohan, Honorable Acting Chief Justice of Delhi High Court. We are extremely obliged for you to taking your time and grace this event with your presence, sir. We would humbly request you to give your blessings to us and this legal reforms in a very few words, sir. Respected
Arjun Meghwal ji, Mr. Chetan Sharma, Learned Relations Solicitor, Mr. Mohit Mathur, President of the Bar Association, Mr. Mathur, President of the Boys, and Mr. Neeraj, whom I know for a very long time because he was the secretary of the Patala Bar Association. And Mr. Rajya, Honorable Secretary, Supreme Court Bar Association. Distinguished ladies and gentlemen, I was telling the Honorable Minister that I have rarely seen such a packed house as I have seen today. And I told him the audience has come only to hear you. In fact, let me begin with two explanations. I came in a bit late because there was a farewell function for two of our judges who had been transferred. So we had to ensure that they were given a farewell. One of them had a flight to catch. Yeah, that's what it is. He has ensured that. The other thing I would like to tell you is that I had stored all my old acts and I had not allowed them to be disposed of, who I had been in touch for about 16 years because I said I will need it after some time. But you know, for the last 10 years, we have had such an overactive parliament that nearly all the old acts have become worthless. Current one, there is a 1913 Act, there is 2013 Act, then look at the Income Tax Act, it has drastically changed. Faceless assessments are coming, which was not there previously. GST is entirely new, which was not there about 15 years ago. And now the criminal acts, it has drastically changed. And look at the change and its positive effect that has happened in the last 10 years. Just look at the GST collection. How phenomenally high they have gone. See, the problem today is there is poverty of ideas. That is what we have been talking about yesterday also when we functioned in the High Court. I said what is lacking today is poverty of ideas. If you find the right people in this slot, you will find great ideas. And just look by one statute, the revenue of the state has gone up manyfold. It could not have happened previously because somehow the parliament was not very active. But in the last 10 years, the way the parliament has enacted laws and such drastic laws that everything has changed. You have also heard with regard to the penal codes which are now coming into force, the two versions. One by Mr. Mahesh Jethmalani, the other view has been presented by Mr. Mohit, and the ASD has given the balanced view. So really, I have nothing to say. And as a judge, I would not like to talk about the new laws because you don't know when the validity comes before you or the legality comes before you. But one thing I would like to share is my experience as a judge sitting on the criminal side. And really, I felt that the whole scenario needed an overhaul. And I will illustrate that by giving you a simple example. I was sitting on the criminal side and I was hearing a murder matter. Where the allegation was that the husband had murdered his wife. It's a disposed of matter, so I can talk about it. The allegation was that the husband used to beat his wife every evening. And since he used to live in a congested locality, the entire locality used to get together virtually in the evening and used to try to explain to the husband or try to make him understand that he should not do this. This girl is a nice girl, she should be allowed to stay over there. The marriage was not very old, it was just about a year old. But the husband would just not listen and would beat his wife mercilessly. And every day there would be quarrel between the husband, the wife, and the entire neighborhood would come and try to resolve the issue. One day, he banged her head so violently against the wall
that she cried for a long time and the entire, as they say, the mohalla gathered together. And unfortunately, the lady died on the spot after about 10 minutes. And this happened in the presence of the entire community. The community was so agitated that they wanted to burn the accused there and then. The police arrived and the police sent wireless dogs saying, please send reinforcement. The people believe that this husband has murdered his wife and they want to burn the husband alive. Imagine the entire mob is there and the police wireless dogs are saying that please send reinforcement immediately, otherwise we will also be burned over here. We are trying to protect the husband because we want him to go through the process of law, but the crowd is so agitated over here that not only will he get burned, will we get burned. All these wireless dogs are there for about 10-15 minutes. The reinforcement comes and the situation is saved. The husband is arrested. Case is filed. Case goes through the normal process of trial. And the police, while filing the charge sheet, includes the two RWA chairman and the secretary who had led that mob, which wanted to lynch the husband, which wanted to burn that house, which wanted to burn the police force as their witness of the incident, to show that they virtually had witnessed that horrific beating of the wife. And lo and behold, what happened? They turned hostile. In majority of the cases which you hear on the criminal side, especially murder matters, you find people turn hostile. It's not 50%, 60%, it is 99%. It is very rare that a witness supports the case of the prosecution. Why does that happen? It happens because people feel alienated from the law that was being administered. The public doesn't feel that law will get them justice. People feel it's a process of harassment. I hope these new laws will change the entire scenario. What was required was digital evidence. What was required was more empathy to be shown towards the victims. It is not just that you recognize the rights of the accused. The victim also has a right in the process. It is not just good enough that the state prosecutes on behalf of the victim. The victim also needs to be involved in this. So, in that case, what was the main problem in that matter was not only the victim had turned hostile, the documentation which had been done on the crime scene was all very difficult to comprehend. There were contradictions in that. And we, while writing the judgment, wrote the first and foremost reform that needs to be done is the crime scene needs to be videographed immediately. The first responders, when they go there, they must have cameras with them, they must record the scene of crime, and that scene of crime must be recorded in such a manner that it cannot be tampered with, and the trial court has confidence in the recording that has been done. I'm glad the audio video recording and now the mirror of forensic examination. The forensic, I think, the branch needed to be made more active. I'm glad it has been done. See, these are the steps which needed to be taken immediately so that people have the confidence that they will get justice at the end of the day. And overall, was required. I am glad that people in power have found time to understand the underlying desire of the common man to see a new system. I agree. It may not be fulfilled in the first instance. It may need amendments. But someone has thought about it and someone is working on their roadmap. That, I think, is a big improvement and a big issue. The other is, as was pointed out by the ASG and Mr. Mahesh, that certain timelines have been laid down for certain issues. I think that also was required because matters tend to drag on, and by the time the evidence gets recorded, our memory fails. And contradictions come in the deposition, which is very difficult to reconcile, especially with a good bunch of lawyers that we have
who are appearing on the defense side. So it's very challenging, but I'm glad that the Parliament has found time to work on this, to bring about amendments. And I hope this exercise doesn't stop with just people gain from their experience and continue with this process. Thank you very much. To Honorable Chief Justice Mr. Manmohan for his insight in the legal reforms which will pave a path for the society. I would further extend a warm welcome to Karnail Singh, ex-president of Saket Bar. Thank you so much sir, for joining us. Anil Gautam, president of AFT Bar Association. Thank you so much sir, for having your grace in your auspicious presence. Gyanendra Singh, secretary, CAT Bar Association. Thank you so much sir, for joining us today. Further, on behalf of Lawyer's Voice, I take immense pleasure to announce that over 40 videos have been produced on different subject areas. With the kind permission of Shri Arjun and Honorable Chief Justice, we would like to display 2 of these videos. Namaskar everyone. We all have seen in the courts, the accused is present, the trial continues. The trial stops. Isn't it a bit awkward that the accused person or an economic fugitive offender decides of a trial, when to stop the trial? Is our legal system so vulnerable, so fragile, so weak that it will keep sending notices, summons, warrants, PO proceedings, one after the other, and will wait indefinitely? Is our courts so powerless that it will bow to the accused and their presence? My view. For a moment, I am not saying that the rights of the accused person are of any less significance. I myself is an advocate. I appeal for accused persons. But what about a victim, a complainant, an aggrieved person? After all, for whom is this legal system for? Victims, right? Is it too much for him to claim, to ask for a fair and speedy justice system? Hence, there is a need for trial in absentia of accused person, who is a proclaimed offender, who is absconding, and who evades the trial. Before the memory fades, before the evidences decay, before the presence of the consumer of this justice delivery system wears thin, before his fair sex, the trial must come to an end, and there is no second thought about it. I applaud the present political dispensation for bringing in provisions like trial in absentia of accused person who is a fugitive economic offender or a proclaimed offender under section 356 of the BNSS. But the legislature is equally sensitive towards the right of the accused persons. In the proviso, it is stated that the trial shall not commence unless 90 days has elapsed from the date of framing of charge, from the date of issuance of 2 consecutive notices or warrants in the name of the accused persons, at least in a month. Unless there is publication in the national and local newspapers, his friends and relatives will be informed. The notice will be affixed at his wall. He will have the right to appeal. The beauty is he will have the right to appeal provided he is physically present. But the period of appeal is also restricted to 3 weeks. Suppose he is arrested when the trial is ongoing. He will have the right to examine those evidences which is taken in his absence. Today, consistent absence of accused person is causing delay and causing backlog of cases.
As per the data that is available with the National Judicial Database, more than 3 crore 34 lakh cases are still pending at the district and taluka levels. I am sure that the provision of trial in absence of accused person will ensure that the process is not exploited. There is a deterrent. With your permission, sir, we would like to display the second video. नमस्कार साथियों, एडिशन का मुद्दा काफी क्या आपको मालूम है तो हमारे देश की सबसे पहली पीएम दूसरी सेडिशन जैसा कानून था भी उसको एक अमेंडमेंट के तहत 1870 में 10 साल बाद लाया गया। अब इसके पीछे कारण क्या? कारण ये था कि जो हमारे देश की सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई ने तो हिंदुस्तानी दिलों में एक स्वतंत्रता की नींव रखी, जो आग जलाई, उससे अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि अब उनके क्राउन की गरिमा और बचाव के लिए, राज के बचाव के लिए सेडिशन जैसा कानून लाना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से एक अमेंडमेंट लाया गया था और धारा 124 की का इंट्रोडक्शन हाईकोर्ट ने सबसे पहले सेडिशन का केस सुना और हमको मालूम है हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी इस कानून के तहत सबसे पहले व्यक्ति बने जिनको कन्विक्शन हुई। महात्मा गांधी जी को भी सेडिशन के तहत कन्विक्शन। अब ये सेडिशन का कानून है पुरानी जो हमारी पिनल कोड उसमें 124 ए जो धारा है वो कहती थी कि सरकार के खिलाफ अगर कोई असहिष्णुता की भावना प्रकट करते हैं तो आपके लिए सेडिशन का मुद्दा हो सकता है। अब हमारे देश में अगर देखा जाए इतने लोग इतने लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं, भाषण देते हैं, नेता है वो जो सरकार है जो पावर में सरकार है उनके खिलाफ इतना कुछ है। अगर देखा जाए सबको तो हम जेल में नहीं बंद कर सकते। तो अब नए कानून आने के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन को भी ये पूछा गया था, ये मुद्दा उनके सामने भी आया था। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कहा था कि सेडिशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए, पर लॉ कमीशन ने दूसरे ओर ये कहा था कि नहीं सेडिशन का मुद्दा रहना चाहिए, सेडिशन का कानून रहना चाहिए। अब हमारे जो नए कानून उसमें सेडिशन को एक अलग अवतार में रखा गया है। मेरे पास एक नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 152 अब उसमें बदलाव ये है कि ये कहता है कि अगर आप देश के खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं, देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको उम्र कैद हो। अगर आप सेसेशन, आर्म्ड रेबेलियन, सेपरेटिज्म की बात करते हैं, हमारे देश में हमने ये भी देखा काफी देश से आजादी चाहते कहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाने चाहिए, एक अलग देश की मांग करते हैं, तो क्या इन लोगों के खिलाफ सेडिशन का कानून नहीं जाना चाहिए क्या? ये बात सही है। By these display of videos, we are aiming to disseminate the concepts of justice, dignity, and equality in the society, and we will go on to do that. Thank you, Royal Voice, for this. We are immensely grateful to Shri Arjun Meghwal, Union Minister for Law and Justice, for his presence today between us. We would kindly request you to provide your insights into the ongoing legal reforms and the vision for a modern legal state also. ये आज का जो सिम्पोजियम है उसको मुझे लगता है समय बहुत लगा है, आप थोड़े बोर हो गए हैं।
आपके काम का था, लेकिन फिर भी टाइम मुझे लगा कि ज्यादा लगा, तो कुछ लोग अभी भी यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, पहले अभी भी खड़े हैं। पहले तो खड़े हैं ना, उनके लिए जोरदार ताली बजा के बैठे हैं, लेकिन इधर भी खड़े हैं, और इधर तो काफी संख्या में अभी भी, बाकी लोग कहाँ गए, शायद ही उनको भी कहो कि आ जाओ। अच्छा एकदम पैक था वातावरण। और ये मुझे अभी हमारे जस्टिस मनमोहन जी बता रहे थे कि कभी कभी होता है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद दो, सब आप आए। देखिए 3 नए कानून और उस पर आपने ये सिंपोजियम रखा है, मैं बहुत बधाई देता हूँ आयोजकों को और उसके लिए जो मंच पर उपस्थित हैं। ऑनरेबल जस्टिस हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अभी महेश जी को छोड़ना था, चले गए, लेकिन भाषण तो अच्छा दिया, ताली बजा के तीनों कैंडिडेट। हमारे मोहित माथुर साहब ने, उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा जैसे डिबेट लंबी चलेगी, लेकिन वो तो चलेगी, लेकिन पॉइंट इनके भी अच्छे थे, उनके भी। मैं कुछ इसमें से कुछ हमारे जो स्टाफ उसमें आया जो लिख रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई वर्कशॉप करते हैं, जो पॉइंट आते हैं, तो हम ऐसा नहीं खुद को छोड़ देते। हमने अभी मोहाली किया वर्कशॉप, वहां भी हमने पॉइंट नोट, हमने साउथ में भी एक वर्कशॉप लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होना है, तो अवेयरनेस तो फैलानी है, तो ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। इसके लिए मैं जेठमलानी जी और मोहित माथुर साहब दोनों का धन्यवाद मैं करता हूँ। मोहित माथुर साहब को बैठे हुए चेतन शर्मा जी ने धर्म को साथ में जोड़ करके अच्छा भाषण दिया, उनको भी धन्यवाद। मतलब आचरण से, इसका मतलब धर्म से अच्छा आचरण होना चाहिए, नैतिकता रहनी चाहिए जीवन में, ये सब बातें हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के चीजें उन्होंने कही। हमारे मंच पर विक्रांत यादव साहब जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी बैठे हैं, सुंदर कुमार गुप्ता जी, नीरज जी, हमारे हिमांशु पाठक, हमारे सुशील राजा जी और सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम ले लिया, लेकिन जो संचालन कर रही है ये शायद हमारे राज्य है, इसके लिए भी धन्यवाद भाई, इससे अच्छा संचालन कर रही है। एक और दो कर रहे हैं, हाँ, दोनों के लिए 2000 ताली बजाओ। देखिए मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि आप काफी समय से बैठे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अभी क्यों ला रहे हो। हम एक बार साउथ में गए तो उन्होंने कहा अभी क्यों ला रहे हो, तो ये आपके भी कोई लोग पूछते हैं क्या अभी क्यों ला रहे हो, अब तो ले आए अब तो ले आए, पार्लियामेंट से पास हो गया और 1 जुलाई से लागू भी होगा, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर के हमने सबके सुझाव लिए, जितने स्टेक होल्डर थे सबसे सुझाव लिए, हमारे सारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, तो सबको पता है, सबसे सुझाव लिए, आपसे भी लिए, पार्लियामेंट में एमपी है, हमसे भी लिए, अमित शाह जी का लेटर आया था कि अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को संशोधन करना, आपकी कुछ सुझाव है क्या, सभी स्टेक होल्डर्स को हमने सुझाव लिए, सुझाव लेकर के फिर इसकी बैठकें होती, और जब जब जिन्होंने भी लॉ कमीशन इंडिया से लेकर के जिसने भी सुझाव दिए उनको भी हमने सम्मिलित किया। बड़ी लंबी एक्सरसाइज हुई थी, इसमें ऐसा नहीं है, हमने हाई कोर्ट्स को भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, हमारे गृह मंत्रालय से और इसमें काफी काम हुआ, दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन यही समय क्यों था, इसलिए मुझे एक चेतन शर्मा जी आपको माफ करेंगे, मैं आपके एरिया में घुस रहा हूँ, मैं आपके एरिया में घुस रहा हूँ, आप मुझे कह रहे थे कि आप अच्छा भाषण देते हैं, नहीं मैं आपके धर्म के एरिया में, जैसे जज साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया इन 4-5 सालों में, ऐसे ही एक धर्म की पार्लियामेंट हुई थी 1893
वो थी ना शिकागो में, या नहीं हुई थी? हाँ, विवेकानंद जी तो गए थे, लेकिन वो धर्म पे ही थी कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, धर्म जीवन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका नाम ही शायद अगर आप महसूस करोगे तो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट ऐसे ही क्या, रिलीजन नहीं था सिस्टम, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, मानवता का झगड़ा क्यों होना चाहिए, आदमी आदमी क्यों लड़े, इसी पे था सारा सिस्टम। अब जब वो 1893 में विवेकानंद जी बोले, वो क्या बोले वो तो आप जानो, लेकिन मैं एक दूसरा विषय ला रहा हूँ कि ये विषय हम क्यों लाए अभी। 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण, मिशिगन यूनिवर्सिटी भी अमेरिका में, वो बाद में इंग्लैंड हो गए थे, फिर इंडिया। जब वो बहुत बहुत अच्छा भाषण देते हैं तो उस समय प्रिंट मीडिया ही ये मीडिया का विषय रहता है कि महिला पत्रकार उसे प्रश्न करती है और बहुत कठिन प्रश्न। स्वामी जी आपने लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया, आपने अपने देश के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, लेकिन आपका देश आजाद कब? तो ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन था, बहुत कठिन था। कब? 1895। तो स्वामी जी ने क्या किया कि स्वामी जी मेडिटेशन में थोड़ी 10 सेकंड, तो उस महिला ने सोचा कि जब प्रश्न कठिन होता है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाए, तो वो चली गई। इतने में स्वामी जी उठते, उन्होंने कहा जिस लेडी ने क्वेश्चन किया हुआ थोड़ा सा वो तो रोड पे ऊपर जा रही थी, बोला बुलाई, तो बुलाया स्वामी जी। बुलाने के बाद कहा कि क्या आपने, कि आपको सुनाई नहीं दिया था क्या, आपको अच्छी तरह सुनाई दिया था, आप बाद में शांत हो गए। बोला मैं शांत नहीं हुआ, मैं मेडिटेशन। तो फिर बताइए कब आपका देश आता? तो स्वामी जी ने आंसर दिए, 3 आंसर दिए, एक नहीं दिया। उसने कहा मैंने एक ही पूछा, मैंने स्वामी जी ने 3 दूं। तो पहला क्या दिया? पहला दिया कि मेरे देश में और जो मेरे देश को शासन करने वाले लोग हैं उस देश में विदिन 50 ईयर ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मेरा देश आजाद हो जाए। अब आप 1895 50 साल क्या हुआ, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इंग्लैंड में चुनाव हुआ, वर्ल्ड वॉर तो जीत गया चर्चिल, लेकिन चर्चिल चुनाव हार गया था, पता है आपको? ये उस समय की ब्रिटेन की बहुत बड़ी घटना है कि चर्चिल वर्ल्ड वॉर जीत जाता है लेकिन आम चुनाव हार जाता है, क्योंकि एक्चुअली जो चुनाव लड़े थे लेबर पार्टी की ओर से, उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अगर मैं जीता तो मैं इंडिया को आजाद करूं। चर्चिल ने कहा मैं जीता तो मैं आजाद नहीं करूं, तो वहां के लोग परेशान थे कि भाई कि काफी दूर जाएंगे, हमारे वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत से लोग मर गए, जनसंख्या में भी कमी आ गई, फोर्स काफी कम हुए। तो बोला नहीं ये एटली ठीक बोल रहा है, थोड़े से अंतर से चर्चिल हार गए चुनाव और एटली जीत तो मुझे बेस पर था। उन्होंने तो 45 में ही कहना शुरू कर दिया था, विवेकानंद जी ने कब कहा 1894 और ब्रिटेन में 1945 से कहना शुरू कर दिया इंडिया को आजाद करना है, आजाद करना है, जल्दी करो। तो विवेकानंद जी की पहली भविष्यवाणी सही हुई या नहीं हुई? यस और नो तो बोलिए, सही हुई क्या? सही हुई। सेकंड की उन्होंने, तो सेकंड उन्होंने मैंने पूछा नहीं, उन्होंने कहा पूछा तो नहीं है तो मुझे दिखा, तो लेकिन थोड़ी इंटरेस्ट नहीं हुआ। क्या है कि कॉल मार्क्स पैदा होता है, कॉल मार्क्स जिसका मार्क्सिस्ट थॉट है, वो स्वामी जी कहते हैं 1816 उसके ठीक 100 साल बाद रशिया में रिवॉल्यूशन आएगा। तो वो महिला कहती नो 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 स्वामी जी आप झूठ बोले, पहला वाला भी आपका पूछे ठीक आंसर ठीक नहीं है, 50 साल में कोई आजाद हो जाएगा इंडिया में, लेकिन ये आपका बिल्कुल ही ठीक नहीं। तो उसने स्वामी जी पूछा क्यों?
कि इंडस्ट्रियल कंट्री जर्मनी है, रशिया में कोई क्रांति हो नहीं सकती। रशिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन स्वामी जी ने कहा, मुझे लगता है और मुझे जो ध्यान में है उस हिसाब से कह रहा हूँ कि रशिया में ही क्रांति है। कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद उसमें कहा अच्छा, फिर आगे बोला, आगे तो मुझे दिख रहा है कि इस क्रांति के ठीक 100 साल बाद जो थॉट कार्ल मार्क्स का चला है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप 1816 कार्ल मार्क्स का ठीक 100 साल बाद 1917 स्वामी जी तो 1895 में बोल रहे हैं भाई, ठीक 100 साल बाद 1917 रशिया में क्रांति हुई या नहीं हुई, बताओ हुई या नहीं हुई? यस ना, हुई। और 2017 ठीक 100 साल बाद आते आते जो थॉट था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था भाई, कभी हुआ तो स्वामी जी की तो भविष्यवाणी सही हो गई, हुई या नहीं हुई? अब तीसरी और क्यों जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कभी कभी कहते हैं ये कहां से आया, ये स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्ड है भाई। उन्होंने सुना, बोला क्या 21वीं सदी भारत की, वो लेडी और शानदार पत्रकार होती है, लेकिन क्या बात कर रहे हो आप? 19वीं सदी के लास्ट में बोल रहे हो 20वीं सदी पूरी खा गई क्या? 20वीं सदी में क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा मुझे 20वीं सदी का कुछ नहीं पता चला, मुझे 21वीं सदी का ही पता चला। और 21वीं सदी में भी उन्होंने एक डिकेड बताया स्वामी जी ने, 2020 से लेकर के 2030 जो डिकेड होगा 21वीं सदी का, ये सबसे महत्वपूर्ण डिकेड रहने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूछ रहा था आपसे कि जब स्वामी विवेकानंद की 2 भविष्यवाणी सही हो गई तो तीसरी सही कहानी होगी भाई? तो इसमें तो डाउट है क्या कह रहे हैं? अब इसमें बड़ा विषय ऐसा है कि सदी विषय क्या है? ये सदी कोई एजेंसी नहीं है इसको तय करने के लिए, ध्यान रखना। आपने सब्जेक्ट में दूसरा ले लिया, फिर मैं इसी में आ रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आपको ठीक लग रहा है तो आगे समझो। मैं इसको थोड़ा सारांश में करूंगा, सदी तय हम नहीं करते हैं। ये राइटर्स क्लब, क्लब, ये लोग मिलते रहते हैं। अब मैं पीछे चल रहा हूँ आपको, हम अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं। सदी क्या होती है? सदी कॉन्टिनेंट की होती है, कोई कंट्री लीड करता है। तो अगर हम बात करें 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी यूरोप की थी, सबको पता है, और लीड किया इंग्लैंड ने, सही है ना भाई? कोई गलत नहीं है। और 20वीं सदी अमेरिका की थी और लीड किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अब 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत अगर लीड करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है क्या? इस कंपटीशन में है, ये तो स्टडी कर रहे हैं लोग एशिया के बीच, और सब हम नहीं कह रहे, वेस्टर्न जितने ये जो देश डिसाइड करने वाले हैं वो कहते हैं ये सदी एशिया। अब एशिया में क्या करें? जो कंपटीशन में है, एक है चाइना, एक है जापान, एक है इंडिया, और चौथा कौन है? आपके एक्सीडेंट के लिए कोई पूछ नहीं रहा आपसे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि जो रशिया है वो 85% एशिया में है और 15% यूरोप में है, इसलिए इसका नाम है यूरेशिया। तो ये 4 देश कंपटीशन, तो रूस का तो अभी आपको चल रहा है, कोई झमेला चल रहा है, और कोई सदी होते तय होते टाइम लगता है। आप देखिए 20वीं सदी यूरोप की थी और इंग्लैंड लीड कर रहा था, लेकिन जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में एटम छोड़ने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया
कि ऐसे तो ये जापान युद्ध जीत लेगा, सुप्रीमेसी कायम हो जाएगी, तो आपके पास अगर एटम बम आ गए तो आप छोड़ोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा, सुप्रीमेसी कायम नहीं होने देगा उनकी। तो छोड़ा, छोड़ने के बाद ये सारे लोग गए कि साहब इंग्लैंड युद्ध जीत गए, तो इंग्लैंड को लीड करने को बोला लो, अब तो सदी शिफ्ट हो गई, अब अमेरिका की सदी रहेगी और यूएस इसको लीड। तब 1945, तो 45 तक यूरोप जीता और इंग्लैंड लीड कर रहा था। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप कौन से साल में चल रहे हैं? 2024, अभी टाइम है, अभी टाइम है। टेक्नोलॉजी में जापान आगे है, इसके कुछ पैरामीटर है, ये सदी ऐसे नहीं थे वो, इसके पैरामीटर। सपोज डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते, कुछ लोग कहते हैं चाइना बहुत आगे है, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते 100 नंबर का पेपर आएगा, तो इंडिया और चाइना का कंपटीशन होगा, तो 100 में से कितने नंबर इंडिया को मिलेंगे और चाइना को कितने मिलेंगे? इंडिया को तो 100 मिलेंगे ना, और चाइना को 0। ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, ऐसे फैमिली का तो एक पैरामीटर। अभी चाइना तो उसी में उठ रहा है, एक बच्चा रहना चाहिए, 2 बच्चा रहना चाहिए, इसी में उठ रहा है। और कोविड के समय तो भारत की फैमिली ने ताकत दिखाई, पूरे संसार में भारत की फैमिली, फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी, कहीं कोई संकट आ जाए तो वो देश मदद करता नहीं करता। आजकल यमन से भी गाड़ी फंस गए दूसरे देशों में, तो भारत छोड़ा के ये उसके बढ़ने के पैरामीटर है, जिसकी तरफ भारत आगे बढ़ गया है। इसलिए चारों देशों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सभी एशिया की हो और भारत लीड करेंगे, तो क्या पुराने कानून जरूरी है? नए कानून आने चाहिए। यस, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा लेकिन प्राचीन से यही समय है, सही समय है भारत का अनमोल। कोई आपको बोले कभी कौन आ रहे हो, इसलिए जरूरी तो दो ये सब देखिए, अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लाए। मोदी जी को न्याय देना है, न्याय हिस्ट्री जानोगे तो 1757 बहुत महत्वपूर्ण ईयर है भारत के इतिहास की, प्लासी का युद्ध, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू लैंड्स मिले। ये बहुत बड़ा इवेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई राज करने के लिए भारत में। लेकिन 1858 में ठीक 100 साल बाद क्या हुआ? ठीक 100 साल बाद क्या हुआ? कानून ही उसमें देखिए, कानून बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के इतिहास के विकास में, जूरिस्प्रूडेंस के डेवलपमेंट में, सोसाइटी में। एक ऐसा कानून लेके आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी कि अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो राजा गोद नहीं दे सकता। राजाओं को लगा अरे हमारी तो संतान नहीं है, हमारा राज्य तो ये ले लेंगे अंग्रेज, तो उस कानून के खिलाफ आंदोलन करना। अंग्रेजों ने उन्होंने गलत कह दिया, वो कह दिया, लेकिन वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन। और जैसे ही आएगा 1857 वाला, 1757 ठीक 1857 तो 1857 में एक्ट आना, हमें राज करना, लंबे समय तक भारत राज करना। तो मैकाले और सब ये आयरिश पेनल कोड था, दिमाग में लगा उन्होंने आयरिश पेनल कोड को इंडियन पेनल कोड कोडिफिकेशन करना था, जल्दी जल्दी करो भाई, और हम उसको ढो रहे थे। ठीक था हमारे जस्टिस मनमोहन ने कि हमने 1562 कानून समाप्त कर दिए जो गुलामी की मानसिकता को लिए हुए थे। 1562 पार्लियामेंट में, और ये जो कानून है इसमें संशोधन किया हमने, नहीं बनाए, भारत की आवश्यकता के अनुरूप बनाए। अब ये
आप देखिए कोई आतंकवादी यहाँ अपराध करके कहीं चला जाए दूसरे देश में, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सब उसमें ठीक कर दिया। हाँ कर दिया। और जो जीरो वाला, जो जीरो एफआईआर वाला विषय है, आप ये हमारे कमेटी में हुआ डिस्कस हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय था जीआरपी और आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। वो क्या होता है कि एक महिला का केस हमारे पास आएगा, एक महिला एक एसी में यात्रा करती है और उसका पर्स चोरी हो जाता है, उस पर्स में काफी सामान होता है, और वो कहती है कि जब वो जागी तब उसको पता चला मेरा पर्स चोरी हो गया। तो वो जीआरपी वाले पूछे कौन से स्टेशन पे हुआ, तो वो कह रही है नींद में थी। नहीं आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ की बात था। इसलिए समझ में आ रहा है क्या आपके? ताली बजाती है। सिंपल भाषा में सिंपल बात करते हैं, आपकी वर्ष को बहुत अच्छी थी और मैं आयोजकों को पुनः बधाई देता हूँ। धारणाओं में नहीं रख करके, क्योंकि ये डिस्कशन हो गया, मैं दोबारा आप मुझे बुला लेना, लेकिन जो भारतीय भाव की धारा है वो नरेंद्र मोदी ने इसमें डाली होती है। यही समय है, सही समय है, और भारत का अनमोल समय है, और भारत को क्योंकि 21वीं सदी जब एशिया की होगी और भारत को उसका नेतृत्व करना होगा, तो नेतृत्व करने के लिए, त्याग करने के लिए भारत जैसे ही कानून, भारतीय भाव जैसे ही कानून भारत में चाहिए, इसलिए लेके आए। और इसमें कोई छोटी छोटी कमी रहेगी तो दूर करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है। समाज लगातार आपसे भी कर रहे हैं, गुवाहाटी करके आए, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब के साथ भी समाज किया है, आप तो फिर कहते थे समाज वहां भी किया, हमने साउथ में भी समाज करके आए हैं, सुधार आ रहे हैं। एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आया है कि 498 को आपने एविडेंस दे दी, याद आ रहा है ना? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का मैं ध्यान रख रहे, क्योंकि कोर्ट भी कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। अब इसमें महिलाओं का ये कहना है कि प्रोग्रेसिव लॉ है, 49 पुराने आईपीसी का 498 है ना, महिलाओं का ये कहना है प्रोग्रेसिव लॉ है, कुछ पुरुषों का ये कहना है सबमिसिव होता है। तो इसमें सेंसिटिव इसको तो सोच करके इसको निर्णय करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के ध्यान में ऐसे गुवाहाटी में बहुत अच्छे सुझाव, जो सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, हमने सारे नोट किए हैं, काफी अच्छे 7-8 बहुत ही वैलिड सुझाव दिए हैं। ऋषिकेश जी थे उसमें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज उस मीटिंग में, इसलिए लगातार हम वर्कशॉप, अवेयरनेस, सिम्पोजियम, इसलिए मैंने इनको कहा था मेरे जी को कि आप ये कार्यक्रम करें, तो उन्होंने कहा हमारा एक संगठन है लॉयर्स वॉइस, हम उसके तहत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आज यहाँ आकर के अच्छा लगा, फंक्शन भी शानदार, प्रेजेंस भी शानदार और डिस्कशन भी शानदार, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जो हमारे स्टाफ ने नोट किए, मैंने भी नोट किए। आने वाले समय में हो सकता है मैं टेलीफोन करके माधुर साहब आपसे बात करूं। आज के प्रोग्राम के लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, मेरी बॉडी प्रोग्राम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। Shri Arjun Meghwal ji, Honorable Union Minister of State for Law and Justice Independent Charge, for addressing us and for this time today. We are deeply honored and truly grateful. I request Shri Meghwal ji, Secretary, Lawyer's Voice, to please present the vote of thanks. नमस्कार साथियों, मैं वोट ऑफ थैंक्स से पहले हमारे एक साथी यूनियन ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली हाई कोर्ट में डॉक्टर डी रामास्वामी, उन्होंने क्रिमिनल मेजर एक्ट जो नया कानून का जो हम लोग सबको जरूरत होती है, छोटी बुकलेट उन्होंने तैयार की है, इसको गुटखा बोलते हैं, उन्होंने तैयार किया है। मैं चाहूंगा कि इनको हम सम्मान करें, अपने साथी कमल जी को और साथी शर्मा को मैं आमंत्रित करूंगा
कि उनका वो स्वागत करें। मैं डॉक्टर बी रामास्वामी जी से आग्रह करूंगा कि उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो माननीय मंत्री जी को के साथ में मैं राजेश मिश्रा जी जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी जो भी उन्होंने मनमोहन को के साथ में मैं भारत अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, भारत अग्रवाल जी वो आए और पुस्तक माननीय चेतन शर्मा जी को लेकर के साथ करें। मैं अरुण पांडे जी से आग्रह करूंगा, अरुण पांडे जी, एडवोकेट अरुण पांडे जी वो आए और पुस्तक मोहित माथुर जी को बताएं। मैं आग्रह करूंगा राजन चौरसिया जी से वो आए और एक पुस्तिका हमारे साथी विक्रांत यादव कांग्रेस सेक्रेटरी साथियों, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, हम गए तो किसी और काम से थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कार्यक्रम दिल्ली हाईकोर्ट में होना चाहिए, नए कानून आ रहे हैं, इस पर कुछ काम करो। मैंने अपने साथियों के बीच में बात रखी, सुशील दादाजी भी साथ में थे। अपने साथियों के बीच में जब बात रखी तो ये प्लान हुआ कि जो नए 3 कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं, इसके बारे में किस तरीके से हम अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में और अपनी लीगल फ्रेटर्निटी में इसको लेकर के आएंगे। उसके लिए हमारे साथियों ने तकरीबन 40 छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर चलाने के लिए और कुछ सीनियर एडवोकेट के हमारे कुछ बड़े इंटरव्यू, जिसमें हमारी बहन कीर्ति आनंद जी का, कीर्ति ऊपर जी का और भी बहुत लोगों के हैं, सबके कुछ 10 सीनियर एडवोकेट के बड़े इंटरव्यू हैं। वो सब आपको धीरे धीरे, क्योंकि अभी समय दूसरा चल रहा था, देश का इलेक्शन चल रहा था, तीसरी बार की तैयारी हो रही थी, माननीय मंत्री जी इस आज कोर्ट में थे। अभी मैं मोहित जी से बात कर रहा था कि वो जिस जोश में थे वो वेस्ट बंगाल से इंचार्ज थे और वहां से आ रहे थे, तो वो उसी अपने इलेक्शन वाले उसमें थे कि ताली बजाओ। तो बड़ा अच्छा माहौल में आज का हमारा ये कार्यक्रम हुआ। कुछ कमियां रह गई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के सजेशन आएंगे तो हम पूरा करेंगे। साथियों, एक तो जो ये बुक है डॉक्टर बी रामास्वामी जी की, वो सभी लोग अपना आईडी लेने के बाद में वो लेकर के जाएंगे, सभी के लिए प्रतियां अवेलेबल। साथियों, मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहा गया है। मैं सभी अपने सभी जो आज यहाँ पर आए, हमारे माननीय मंत्री जी अर्जुन मेघवाल जी, मैं उनका एक जैसे आभार करता हूँ। अपना आज उनको लेट पहुंचना था प्रोग्राम, थोड़ा भी बढ़ता नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मैंने सबमिट किया है, तो मैं जरूर उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में महेश जेठमलानी जी, उनसे भी मैंने बात की कि भाई आपको सर आना है, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे जल्दी निकलने का आवश्यकता है। तो इसी वजह से वो उनको बोलना तो बात था, लेकिन पहले बोल करके उनसे मैं उनका भी
धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे बीच में हमारे चेतन शर्मा जी, जिनको आपने सुना और देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी। धर्म के साथ में हमारे इस भारत के संविधान को और भारत के कानूनों को उन्होंने किस तरीके से यथार्थ रूप से हमें बताया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बार के प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई मोहित माथुर जी, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे बीच में हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिन्होंने अपना आज का जो समय था एक्टिव शेड्यूल था, उनके दो साथी यहाँ के ट्रांसफर करके दूसरे स्टेट में गए हैं। उस कार्यक्रम को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उन कार्यक्रमों को भी रिशेड्यूल किया और इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना समय निकाला, मैं उनका भी धन्यवाद। विक्रांत यादव जी, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। रिसेंटली वो अभी जीते हैं सुप्रीम कोर्ट बार में, मैं उनका करता हूँ अपने लॉयर को तरफ से, अपने सभी साथियों की ओर से मैं भारत सरकार के कानून मंत्री को मैं बधाई देता हूँ एडवांस में कि 4 जून को हम फिर से एक बार एक कार्यक्रम करेंगे, दिवाली मनाएंगे, चाय लेकर के जाएंगे और Thank you everyone.